Hello everyone. So in this topic we are going to discuss about the basics of digital signal processing. In this particular video we are going to discuss about the basics of signals, what is signal processing, its different forms, and we'll come across block diagram of our digital signal processors. So let's start with the first part as signal basics. Now let's first define what is meant by signal. Signal is nothing but it is a function that carries information. So in a very smoother way we can say any function that carries information is called signal. Another definition we have is it is a physical quantity that varies with time, space, or any other independent variable. So any quantity which varies with respect to the time, space, or any variable is called as signal. अब इसके अगर एग्जांपल की बात करेंगे, so we have various categories of signals those who are using on a regular basis. तो इसमें हो सकता है एग्जांपल के तौर पे हमने लिया स्पीच सिग्नल है, वीडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, हार्ट बीट सिग्नल्स, ईसीजी, ईईजी, इवन पिक्चर सिग्नल्स आर देयर. So these all functions are varying with respect to some of the parameters जिसको हम कह सकते हैं signal. So this is the simplest way of defining our signal. Now coming to the part of its types. So basically we have two sets of signals. The first one is called continuous time signal and the other one is called as discrete time signal. Now let's concentrate on what is meant by the continuous time signal. So a signal which is defined at every instant of time is called continuous time signal. So any signal which is defined at every instant of time, it is called continuous time signal. It is basically represented as x of t. अब ये जो ब्रैकेट में t दिख रहा है, it is nothing but our time variable and x is nothing but that particular signal. यहाँ पर साइन सिग्नल हो सकता है, कोसाइन या फिर कोई भी सिग्नल हो सकता है. सो इस वाले को आप कह सकते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. इफ यू कम अक्रॉस दिस डायग्राम, सो यू कैन सी दिस इज द रेफरेंस एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, विच इज डिनोटेड एज टाइम, और वाई एक्सिस पे हम जनरली इसका एम्पलीट्यूड लेते हैं विच इज मेजर्ड इन वोल्टेज. सो दिस पैरामीटर इज एम्पलीट्यूड और ये है टाइम, और ये सिंपली हमने स्केच किया एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल. अब ये हर पैरामीटर पे डिफाइंड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. सो जो हम रेगुलरली जो सिग्नल्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर एंड दे आर कंटिन्यूस इन नेचर. राइट. Coming to the second part, which is most important, is our discrete time signal. So let's define it. So a signal which is defined at only specific time intervals is called discrete time signals. Right? That means it is not defined at every instant of time. अब अगर हम बात करेंगे कि इसको हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है सर्टेन इंटरवल्स पे, तो इसको हम कहते हैं सैंपल्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंपल्स. मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो इसको डिनोट करते हैं x विद द ब्रैकेट n. अब ये जो n है ना, दिस n इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर हम इसको कहते हैं सैंपल्स. दिस इज नथिंग बट आवर सैंपल, और x जो है उसका वैल्यू इंडिकेट करता है. एग्जांपल, इट कुड बी अ सैंपल्ड ऑडियो सिग्नल, digital images, or any signal which is being used in our processors. So these all signals would be termed as a discrete time signals. अगर डायग्राम की बात करते हैं तो again we can have the x-axis parameter as n, which is nothing but our variable, और ये जो y-axis पे samples हमें दिख रहे हैं, they are nothing but our sample values. तो हर एक सैंपल का कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, उसको हमने इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया है. इस तरह से डिफाइन किया है इंडिपेंडेंटली. सो अगर हमने इसको कनेक्ट किया होता तो ये हो जाता कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, बट दे आर नॉट डिफाइंड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. फाइन. सो दिस इज अ ब्रॉडर टर्म ऑफ डिफाइनिंग आवर कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए, कंटिन्यूस है तो एक्स ऑफ टी आएगा, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो वही आ जाएगा एक्स ऑफ एन. नेक्स्ट, let's come across signal processing, which is most important. So what is signal processing? So it is any operation that changes the characteristics of signal. So any operation
that is going to change the characteristics of a signal is called our signal processing. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? तो इन अ वे अगर हम कोई भी सिग्नल देखते हैं तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इसका एम्पलीट्यूड या फिर फेज या फिर होता है फ्रीक्वेंसी। सो कोई भी सिग्नल हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ रेफरेंस ऑफ दिस 3 पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी। सो अगर हम इसको अल्टर करते हैं तो इट बिकम्स एन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिग्नल प्रोसेसिंग। okay? For example, even if we could take an example of filters, okay? The main function of filter is to remove unwanted signals, जिसको हम noise भी कहते हैं। तो एक प्रकार का सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। सो एनी ऑपरेशन दैट चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कह सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। अब इसकी भी 2 टाइप्स है जो हमें डिस्कस करनी है। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। हाउ कैन यू डिफाइन इट? Basically, any processing operation that processes the analog signals is called analog signal processing. So, processor whose input, output both are in analog form, they are called as analog signal processors. अब इसके डायग्राम की भी बात करते हैं। सो सिंपली हमने एक लिया एक ब्लॉक विथ सर्टेन इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स which are defined like this. So you can see at the input side we have a continuous time signal x of t, analog signal. At the output side we have an output y of t, analog signal. So as both input and output are analog in nature, this processor is called analog signal processor. अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर जो है उसमें हम ले सकते हैं ऑसिलेटर्स या फिर रेक्टिफायर्स, फाइन, जहाँ पर कि एनालॉग कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं मोस्टली, फाइन। तो इन सभी एप्लीकेशंस में अगर हमने एनालॉग सिग्नल्स या फिर इसके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स यूज किए तो उसको हम कह सकते हैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, फाइन। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूज करने वाले हैं वो हो सकता है डिस्क्रीट इन डोमेन या फिर वो डिजिटल सिग्नल हो सकता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे विद सेवरल पैरामीटर्स here. Okay, so we're having several blocks. The first block is anti-aliasing filter, second is sample plus hold, A to D converter, this is a digital signal processor, D to A converter, and a reconstruction filter. Now let's start with the first. What is the function of anti-aliasing filter? So basically it is a low pass filter which is used to remove हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज एंड टू बैंड द सिग्नल। तो यह क्या करता होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या फिर नॉइज कंपोनेंट जो है उसको रिजेक्ट करके पासेस ए लो फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ सिग्नल्स। सो इसको हम कहते हैं एंटी अलाइसिंग फिल्टर। अब ये एंटी अलाइसिंग फिल्टर का जो भी आउटपुट होगा वो कनेक्टेड होगा सैंपल प्लस होल्ड सर्किट से। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैंपल प्लस होल्ड सर्किट? सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स द इनपुट टू आर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट। सो इसका जो भी आउटपुट है इट वर्क्स एज एन इनपुट फॉर दिस पर्टिकुलर ए टू डी कन्वर्टर। नाउ वी ऑल नोज ए टू डी कन्वर्टर इज नथिंग बट इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिजिटल फॉर्म, दैट इज एन बिट बाइनरी नंबर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे सराउंडिंग्स में सभी सिग्नल जो है एनालॉग होते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इनपुट पे लिया है एक शॉप टी और अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा वाई आउट। बट इसके बीच में यहाँ तक हम जो भी सिग्नल्स यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा डिजिटल सिग्नल या फिर डिस्क्रीट सिग्नल। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ब्लॉक लिया है ए टू डी कन्वर्टर। क्लियर? अब इसका जो डिजिटलाइज सिग्नल होगा वो अप्लाई करेंगे हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को। इट इज ए लार्ज कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर्स जो हम यहाँ पर यूज करेंगे जो वर्क करता है ऑन डिजिटल सिग्नल्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंटेल का 80 सीरीज ले सकते हैं, 8085, 8086। यहाँ पर अभी जो हम कोर टू ड्यूल कोर यूज करते हैं वो सभी सिग्नल्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर मोटोरोला का जो सिग्नल जो प्रोसेसर्स है 68 सीरीज का वो भी हम इसमें ले सकते हैं। So basically this is the basic heart of our digital signal processor, जहाँ पर सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है and it is being forwarded.
अब इसका जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट करेंगे D2A कन्वर्टर से. इट्स फंक्शन इज रिपीट, it converts digital signals into the analog form. Fine. But the main disadvantage of this particular converter is यहाँ पर जो analog signals हमें मिल रहे हैं वो purest form में नहीं होते. So they may contains noise या फिर unwanted signal. And to recover our original signals, we are using a reconstruction filter. तो यहाँ से जो analog signal मिल रहा है, it is applied again to reconstruction filter. So यहाँ पर again एक लो पास फिल्टर हम यूज करेंगे जो कि ओरिजिनल सिग्नल को फेच करेगा और नॉइज या फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है सिग्नल से उसको रिजेक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ एक्चुअली आर ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैन बी एक्सप्लेन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ DSP, advantages and disadvantages of DSP. Thank you very much.